So, good morning, all of you. We are discussing the electronic configuration for molecular orbitals. Okay, for molecular orbitals. Now, these molecular orbitals are formed due to mixing of atomic orbitals of two different atoms. Try to understand the language. Molecular orbitals are formed due to mixing of atomic orbitals of two different atoms. Hello. So sigma 1s is formed because of the mixing of 1s orbital of two different atoms, right? Then sigma star 1s, which are formed because of ये anti bonding molecular orbital है. So जब भी atomic orbital mix होता है, दो atomic orbital mix हो गए तो दो molecular orbital बनेंगे. एक रहेगा bonding, दूसरा रहेगा anti bonding. जो मैं बता रहा हूं ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. We already discussed. Watch those videos again and again. Okay. Sigma 2s bonding molecular orbital, sigma star 2s anti-bonding molecular orbital, less energy than sigma. अभी यहाँ पे है what pi 2px, मतलब ये n2 में होता है. ये क्यों होता है? It is because of mixing, intermixing of 2s and 2p orbital. So pi 2px, which has almost same energy to that of pi 2py, right? Which has a less energy than sigma 2pz, which has a less energy than pi star 2px, less is equal to pi star 2py, and more energy than sigma star 2pz. Okay, this was the electronic configuration. ये तुम लोग को in short रटना है, और वो जब तुम लोग लिखोगे ना तो अपने आप को याद हो जाता है. ये सामने रखने का और लिखने का. देखो मैं बताता हूँ कैसे. हाइड्रोजन मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी He2 बताता हूँ. He2 मतलब प्रतीक. He2 means helium. One helium has two electrons. So He2 stand for how many electrons? 4 electrons. Yes. So we have sigma 1s 2. ओके, बराबर है. एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे. प्रतीक काय 5 6 काय पण टाकून ठेवले. सो सिग्मा 1s2, उसके बाद किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में 1s2. तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया था? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग मतलब ये बॉन्डिंग है. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2. एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब उसमें बॉन्ड नहीं है. नो बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके. So if I say H, don't try to visualize the thing. Okay.
व्हेन आई से He2 प्लस, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, बराबर है। तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1. Is that clear? What is the bond order? Bond order over here is, what is the bond order? Bond order is equal to number of bonding electron 2 minus 1 divided by 2, that is what? 0.5. उसके बाद देखो He2 माइनस होगा समझो, तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, देन कितना होगा, 1s 2 और सिग्मा 2s1, राइट. सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर, क्या रहेगा, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा, 0.5, राइट. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बोलो जरा, लिखा है ना तुम लोगों ने. यस मृणाली, टेल मी द आंसर. मृणाली, श्रुति, yes. Yes, sir. So tell me the answer. Which is the most stable and which is the least stable? बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा. और दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया था? What was that? Yes? Electrons in anti-bonding molecular orbital. Should be less. Right now. So where we have a less antibonding electrons, He2 प्लस में ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब He2 प्लस more stable than He2 minus than He2. इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए लीस्ट स्टेबिलिटी हो गया. यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, और यहाँ पे कितने, 2. अंडरस्टूड. उसके बाद मैंने बताया था Li2. दोज हु हैव नॉट रिटन प्लीज ये लिखो. जिन लोगों ने ये चीज नहीं लिखी है, जिन लोगों ने होमवर्क इनकम्प्लीट रखा है, नोट डाउन दिस along with me. Li2 एटा, और जिनका गलत आया है, तो ये क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, राइट. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, क्या रहेगा यहाँ पे, कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये 2 और ये 2, 4. और एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले, -2 डिवाइडेड बाय 2. तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1. अगर समझो मैंने लिखा Li2 प्लस, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा. सो व्हाट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1, राइट. तो अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलो, कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1, 3, 3 हो गए. माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया है, 0.5. तो इसका मतलब विच इज मोर स्टेबल, Li2 इज मोर स्टेबल देन Li2 प्लस. अंडरस्टूड? एनी डाउट? कैन यू सी दिस नाउ, ये जो लिख रहे हैं. हाँ, उसके बाद Be2, ये दिख रहा है Be2. Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, तो बेरिलियम कितना होगा, 4. तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सिग्मा 1s2
उसके बाद 4 मतलब 8 हो गए ना टोटल इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। अंडरस्टूड? यस। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ना? 8, 2 और 2 4 और 2 4 8। अंडरस्टूड? एक ऑर्बिटल में दो। प्रतीक समझते का? संस्कार, आर यू गेटिंग? Yes, sir. प्रतीक, वेर इज प्रतीक? Yes, sir. तू वाचलं? पुस्तक वाचलं? तुला काय सगळं चमच्याने भरवायला पाहिजे का रे? See, here always remember that 2 times and still you haven't sent me the corrected homework. I told you na it was wrong. So what is the bond order? Bond order is 2 bonding 2, bonding 2 4, anti-bonding 2 and 4. So 4 minus 4 divided by 2, that is equal to 0. That means no bond formation, right? If I write Be2 plus, so what we have, sigma 1s2, then sigma star 1s2, then sigma 2s2, sigma star 2s1. So what should be the bond order? Tell me. Bonding electrons 4 minus 3 divided by 2. That is nothing but 0.5. So bond order is more. First of all, we have to check the bond order. Be2 plus is more stable than Be2. Please note down this. Those who are not written, please note down. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली है कैसे? ऐसे है ना, मतलब दे आर कैंसलिंग ईच अदर स्पिन ना। इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑल हैव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेदिका, व्हेन द मॉलिक्यूल हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it is said to be diamagnetic. It is said to be diamagnetic. Okay. Now when they have a unpaired electron, unpaired electron मतलब ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, unpaired electron, then it is said to be paramagnetic. तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। इसके बारे में डिटेल तुम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, फिर भी मैं एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेट, यहाँ पे देखो ये ऑल आर व्हाट? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। ओके, ये देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। So paramagnetism arises because of presence of unpaired electron, and diamagnetism arises because of absence of unpaired electron. Okay, देखो जरा एक बार ये मैं चीज एक्सप्लेन कर दूं। सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है, ध्यान से देखना, और उसमें देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, each electron is considered as considering a magnetic moment. तो ये ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, these are all electron. I'll write this something different way, कुछ अलग दिख रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं ना, ऐसे सिंगल स्पिन इलेक्ट्रॉन, कुछ एक दूसरे को पेयर अप कर रहे हैं ऐसे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब मैं ये सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, इसका डायरेक्शन ऐसे है,
उसको बी बोल। जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दे अलाइंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट along with the external magnetic field। ऐसे अगर उल्टा रखा है तो उल्टा। Because of this, it get weakly attracted in an external magnetic field. Okay, then it is called as paramagnetism. This phenomenon is called as paramagnetism, and the substance is called as paramagnetic substance। Paramagnetic substance। Understood everybody? सबको समझ में आया? मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये फिजिक्स में फिजिक्स का पार्ट है, मैं सिर्फ उसका क्या बोलते फ्लेवर दे रहा हूं तुम लोग। उसका डिटेल में कैसे होता है क्या होता है ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके, अभी आगे देखो। दूसरा एक चीज ऐसे होता है, सो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स विच हैव अ पेयर। पेयर मतलब ये इसका स्पिन ये कैंसिल कर रहा है, ये इसका स्पिन ये कैंसिल कर रहा है, इसका स्पिन ये कैंसिल कर रहा है, इसका स्पिन ये कैंसिल कर रहा है। अगर समझो मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्योंकि दे आर नॉट अलाइंड, मतलब वो एक दूसरे का स्पिन कैंसिल ही कर रहे हैं, so they cannot align with the external magnetic field। they cannot align with the external magnetic field। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक, or that phenomenon is called as a diamagnetism, and that substance is called as diamagnetic substance। ये हम लोग कब कंसीडर करते हैं? व्हेन वी आर कंसीडरिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? मतलब सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n into n+2, where n stand for number of unpaired electrons, unpaired electrons। इसका मतलब इन शॉर्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू जीरो। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आया? वेदिका अंडरस्टूड? वेदिका, Yes, sir. yeah, please note Yes, down this sir. part, note down this part।
आय नो आपण तिथपर्यंत पोहोचलो ना अथर्व. वेट फॉर सम टाइम. Today last time I told you that this electronic configuration is up to nitrogen. उसके आगे अलग है, तो वो हम लोग को आज देखना है. ओके चलो, तो अभी मैं आगे जाता हूं. आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर्स. सर लास्ट सॉरी 2 मिनट लास्ट लाइन बाकी. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. हो गया सर. डन. चलो, सो अभी हम लोगों ने कहा क्या देखा था अभी तक? बेरिलियम देखा था. नाउ लेट अस गो फॉर द बोरॉन. हाँ अच्छा, मुझे बताना बोरॉन में हम लोगों ने क्या क्या लिखा था वहां? B2. B2 एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2 सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2 देन पाई. कितने हो गए देखो? 8 हो गए ना. अभी क्या होगा देखो? पाई 2px और पाई 2py. ये दोनों का एनर्जी सेम है ना, तो हंड्स रूल फॉलो हो गया. हंड्स रूल क्या बोलता है? पहले इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग सिंगल सिंगल ऐड करो. तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ऐड किया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया. समझ में आया क्यों? जस्ट गो टू द डायग्राम, यू विल फाइंड दिस टू हैव अ सेम एनर्जी. When there are same energy molecular orbital, initially we have to add single electron. एक बार ये single हो गया ना, then you can pair it up. देखो अभी 1 2 3 4 ये 8 9 और 10. अभी इससे क्या हो गया? B2 जो है ना वो हो गया पैरामैग्नेट. क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक. B2 is nothing but what? Paramagnet. Now what is the bond order for this? यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है कौन सा, कितना रहेगा? देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. 2 और ये 2 4 और ये भी तो बॉन्डिंग है. 6 हो गए. माइनस 2 और ये 2 एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1. इज दैट क्लियर? ओके. इंटरेस्टिंगली इसका मतलब देखो ना, पाई ये एक दूसरे को कैंसिल करे अगर मैंने मान लिया, तो पाई में वी हैव अ ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर एक है, वो जो एक पाई बॉन्ड है, सॉरी एक जो बॉन्ड बना है वो क्या है? पाई बॉन्ड है. इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने वीबीटी में क्या देखा था? वीबीटी में हम लोगों ने ये देखा था कि पाई बॉन्ड कब बनता है? जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तब ना. पाई बॉन्ड कब बनता है? पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है. यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. ओके. इन B2 single bond is pi bond because
ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स है, दो सिग्मा ऑर्बिटल्स आर इनर ऑर्बिटल. सो अगर मैं वैलेंस ऑर्बिटल्स कंसिडर करूं, सो वैलेंस ऑर्बिटल फॉर्मिंग व्हाट, वन बॉन्ड, एंड दैट वन बॉन्ड इज ऑफ व्हाट, पाई बॉन्ड नेचर. पाई नेचर, पाई ऑर्बिटल से वो बना इसलिए. ओके अच्छा, B2 में मैंने B2 प्लस भी दिया था क्या? हेलो. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो B2 प्लस में क्या होगा, ये देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सी वंस यू बिकम मतलब मास्टर हो जाओगे ना, तो वो देखने के बाद ही तुम लोगों को पता चलेगा. बट इनिशियली सिंस इट इज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट एवरी टाइम, तो उससे क्या होगा, ये तुम लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा. 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 और पाई 2py में तो कुछ नहीं रहेगा. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, टेल मी. कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है? 5. 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 0.5. ओके, और मैंने B2 प्लस में B2 माइनस भी दिया था. Yes, sir. हाँ, सो B2 माइनस क्या होगा? B2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 11. तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 पाई 2py1. अभी पेयरिंग चालू, तो इसलिए क्या हो गया, पाई 2px2 पाई 2p. एक पर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ना, तो एक एक और वापस एक. समझ रहे हो मैंने क्या किया वो? तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही है. ओके, बट द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसमें रहेगा? B2 में रहेगा. बॉन्ड ऑर्डर बोलो कितना होगा? 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? ये 7 ना, 2 2 4, हाँ यस, 7 माइनस 4 मतलब ये होगा 3, 1.5 हो गया ये. सो विच इज मोर स्टेबल? Which is more stable? B2 minus is more stable than B2 than B2 plus. Is that clear? Everybody understood? So जिन लोगों ने नहीं लिखा है प्लीज लिख लो. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो. Don't deal the things alone. जो भी तुम लोग के मन में वो सिली भी रहेगा, क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा गालियां मिलेगी ना, सुन लो ना, उसमें क्या है, ये मैंने पहले ही बताया. आस्क, ओके, बट बाद में गलतियां मत करना और फिर बाद में बोलना मत, सर आपने ऐसे ही बताया था करके. ओके चलो अभी C2 बताता मैं. C2 कार्बन में एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. सो टोटल कितने हो गए? 12. इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 पाई 2py1 पाई 2px2 पाई 2px2. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? देखो 2 और 2 4 और ये 4 8. 8 माइनस 4 divided by 2 that is what 2. now interestingly ये भी वैसा ही हो गया, ये देखो. तो इसका मतलब इन C2 डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये सिर्फ इसमें ही पॉसिबल है. P2 C2 में ही पॉसिबल है. ओके बाकी सब में देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, बाकी तुम लोग लिख सकते हो. अभी हम लोग नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं. जिन लोगों ने नहीं लिखा था, जिन लोगों का गलत आ गया, प्लीज नोट डाउन. इसमें किसी को डाउट है देन आस्क. ओके
चलो डन. हेलो. छवि डन. छवि. मृण्मयी. वेर इज मृण्मयी? Yes, sir. डन. हे केलं आहे ना आपण होमवर्क मध्ये? हो. Okay. Nitrogen N2. So we have sigma nitrogen atomic number 7. So total there are 14 electrons. So sigma 1s2. Now in book, here onwards, they are not writing sigma 1s and sigma star 1s. They consider it as a core electronic configuration. कोर मतलब ये बहुत अंदर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कभी चेंज नहीं हो. सो इंस्टेड ऑफ दैट दे डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब वहां पे लोग के लिखते हैं, के शेल ना, फर्स्ट शेल इज अ के, सो के शेल. ओके, सो वो भी करेक्ट है. सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. डोंट सी हियर एंड देयर नाउ. प्रतीक, just pay attention over here. Samskar. Okay. Arya Bagwe is there? Hello. Ah, Yes, sir. ah. Next one is what? Sigma. So here we have a pi 2px 2 pi 2py 2. How many electrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Then we have pi star 2px 2 pi star 2py 2. Correct, na? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm sorry, I made some mistake. Oh, I'm sorry. यहाँ पे आएगा सिग्मा ऑर्बिटल. सिग्मा 2s 2p 2pz 2pz 2. Correct. So what is the bond order over here? How many bonding electrons? 2, तो 4 और ये 6, मतलब 10 हो गए. 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 नहीं 4, तो ये हो गया 3. नाउ हियर लुक एट हियर, pi bond और ये सिग्मा. सो नाइट्रोजन में वी हैव अ 1 सिग्मा एंड 2 pi bond. अच्छा, मैंने N2 प्लस भी बताया था, N2 प्लस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, then pi 2px2, pi 2py2 and sigma 2pz1. है ना? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा अभी? 9 minus 4 divided by 2. How much it is? 2.5. करेक्ट. और क्या दिया था नाइट्रोजन के साथ, N2 प्लस के साथ? हेलो. अच्छा, अभी वेदिका, दिस इज paramagnetic because unpaired electron. So this is diamagnetic and this one is what? Paramagnetic. Which is more stable? N2 is more stable than N2 plus. Understood? Any doubt over here? Okay. ये लिखो जल्दी.
चलो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ molecules where there is no sp mixing. Okay, molecular orbital electronic configuration with no sp mixing. Okay, so एग्जाम्पल उसमें फर्स्ट है O2 ऑक्सीजन गैस। अगर वहां पे sp मिक्सिंग नहीं है तो कैसे होगा, देखो सिग्मा 1s, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 16, 1s2, sigma star 1s 2, sigma 2s 2, sigma star 2s 2. Now we have a sigma 2p z 2. Can you get this? Okay, then pi 2px 2, pi 2py 2. Understood? ये डिफरेंस समझ में आया? सी द डिफरेंस क्या हो गया, जो पहले वाले केस में पाई पहले था सिग्मा बाद में था, अभी सिग्मा फर्स्ट, so there is no sp mixing over here. Then what, pi star 2px 1, pi star 2py 1. अब वो प्रिंसिपल ना, देखो यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15 16 बाद में पेयरिंग होगा ना। Understood? Everybody got the point? Hello? Yes, sir. Anybody? Please note this. तुम लोग भी ऐसे, I encourage you to use colored pen. तुम लोग भी ऐसे कुछ तो मार्क करना यहाँ पे। So this electronic configuration is because of why no sp mixing. What is the bond order? कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में? 2, और ये 2 4, और ये 6 8 10 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 + 2 4 + 2 6, 10 - 6 / 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। देखो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। सो पता है हम लोगों ने जब वीबीटी का ड्रॉबैक्स देखे थे, सो दैट टाइम वी मेंशन दिस ड्रॉबैक। व्हाट वाज दैट? Oxygen is paramagnetic, which was not explained by VBT. Okay, oxygen is paramagnetic, which was not explained by VBT. ठीक है, चलो अभी मैं और इसमें कुछ चीजें ऐड करता हूँ। O2 minus. So when I say O2 minus, this is nothing but superoxide. ये क्या हो गया? सुपर ऑक्साइड। तुम लोग लिखो, अगर मैंने लिखा O22 माइनस तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पेरोक्साइड। इज दैट क्लियर? O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, O22 माइनस पेरोक्साइड। ओके, उसके बाद एक और है, हाँ O24 माइनस, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर देखना। यहाँ पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन ऑक्सीजन? कितना होगा बोलो? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन ऑक्सीजन? बोलो। यस, कम ऑन, पुट इट इन द चैट बॉक्स। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा?
एक ऑक्सीजन का मैंने x मान लिया, तो 2x इज इक्वल टू -2 -1, so x is equal to what? Minus half. So when one oxygen carries minus half oxidation state, it is called as a superoxide. यहाँ पे कितना होगा? 2x minus 2, तो x is equal to what? -1. जब एक ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1 होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेरोक्साइड। और एक ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -2 है, जो यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, peroxide and oxide. Please write down their electronic configuration. Come on, fast.
Yes, guys, done. Kaumudi, please check it once again. O2 2 minus. वत्सल, तेरा O2 2 माइनस रॉन्ग है, चेक करना एक बार. Yes, anybody is there still who is struggling? बरोबर संस्कार. O2 minus bond order is नहीं संस्कार, check कर. Something is wrong. Yes, Vithi. Okay. Zero. Okay. Yes. हाँ. So just cross check your answer now.
क्रॉस चेक योर आंसर नाउ. सो हियर जिन लोगों ने नहीं किया तो वो लोग भी देखो अभी. O2 माइनस, O2 माइनस मैंने क्या बोला, सुपर ऑक्साइड ना. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 70. सो वी हैव अ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. यू वोंट बिलीव, ये ना बार बार लिखने के बाद ही मुझे मतलब ये हर बार मैं लिखता हूँ, इसमें ना मैं शॉर्टकट नहीं मारता. तो उससे क्या हो गया, ये मुझे याद रह गया. ओके, सो इट इज माय एडवाइस, यू आल्सो राइट. और यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी ऑन दिस कंसेप्ट ओनली. ओके, सो पाई टू पी एक्स 2 पाई टू पी वाई 2. यहाँ पे क्या होगा, 17 है ना, तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px2 and pi star 2py1. ओके, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 8 10, 10 minus 2 plus 2 4 6 7 divided by 2. So that is nothing but 3 1.5. So O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1.5. O2 2 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. डोंट अभी शॉर्टकट मत मारना, शॉर्टकट बाद में, पहले प्रैक्टिस. ओके, काय संस्कार, शॉर्टकट मारला ना तू आता इथे. नो शॉर्टकट्स, आई नो. अभी तुम लोग, अरे ये क्या, because I'm with you now, you are able to write this without making any mistake. Okay, but एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा ना, तो इसलिए खुद से लिखना. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होना चाहिए, रहा ना. 9 9 9 9 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया. माइनस 1 2 3 4 मतलब ये 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 1. और यहाँ पे सिग्मा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 pi 2px2 pi pi 2py2 pi star 2px2 pi star 2py2 sigma star 2pz2. करेक्ट. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर है ना, कितने हो गए ये? 16 20 होने चाहिए ना. यस, यहाँ पे होगा 10 minus 10 divided by 2. So 0 is the bond order. So which is the most stable? O2 is the most stable. Then comes O2 minus superoxide. Then comes peroxide और O2, मतलब ये बनता ही नहीं बेसिकली. O2 4 minus oxide. Understood? Yes. हाँ, किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है? O2 का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है. उसके बाद O2 माइनस, और ये दोनों क्या है? डायमैग्नेटिक है. O2 2 minus or O2 4 minus are diamagnetic in nature. Understood? Yes, I hope everybody got this. Correct? तो चलो अभी तुम लोग F2 लिखो. F2 अभी मैं नहीं बताऊंगा. F2 atomic number of F is 9. So you tell me F2 में कितने unpaired electrons रहेंगे? What is the bond order? Whether it is paramagnetic, diamagnetic, you tell me. चलो fast.
Yes, correct, Kamudi. Yes, Vidhi, correct. Yes, Vedaj, correct. Abhi, correct. अथर्व काजवे करेक्ट. चलो बाकी लोग भी आंसर दे दो, बताओ मुझे फटाफट. Come on guys. Yes, Sanskar, correct. So, wrong. Vatsal, galat. Vatsal, you are talking about bond order. If it is wrong. So, bond order दो बार है. Which one I have to consider? Last one. Second one. हाँ, correct है. रोहन correct. वत्सल bond order wrong है. वत्सल क्या हो गया? अरे बॉन्ड ऑर्डर काढायची आपल्याला. वेदांत. हाँ, बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट. यस वेदिका करेक्ट. हाँ, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 कैसे होगा? 3 नहीं होगा ना, गलत है ना वो. यस मृण्मयी करेक्ट. जानवी करेक्ट. योगिता, इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक. अक्सर क्या गड़बड़ कर रहा है तू? Vatsal, check it. What happened? Yes, Vatsal, please speak up. Vatsal, where is Vatsal? Yes, Shruti.
कैलकुलेशन एरर 4 भी नहीं है, चुप बैठ। ये देखो, ये है सिग्मा 1s2। या एनीबडी इज देयर हु हैज नॉट शेयर योर नील, वेयर इज योर आंसर? विराज, आंसर नहीं आया अभी तक। नील आंसर। यस प्रतीक। छवि आंसर नहीं आया। आर्य आंसर। यस प्रणाली। So here we go. Sigma 1s2. So total 18 electrons are there. Sigma star 1s2. Sigma 2s2. Sigma star 2s2. Sigma 2pz2. Pi 2px2. Pi 2py2. Pi star 2px2. pi star 2py2 क्या है? तो ये 2 और 2 4, 6, 8 और ये 10 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए 10 माइनस 2 और 2 4, ये 8, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। क्या आ गया वत्सल? इतना सिंपल था और ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक रहेगा। क्या गलतियां कर रहे हैं तू? समझ में नहीं आया अभी भी? आया सर। फिर silly mistake. Okay, there is one question which I want to give you now. हाँ, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। 2 टर्म, one is called as a HOMO, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा है लूमो। ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया गया, अपने टेक्स्ट बुक में शायद नहीं है। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। ओके, जस्ट पे अटेंशन। जब मैं बोलता हूं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सो यू नो एनर्जी कैसे जाता है? ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये देखो, ये भरा हुआ है, भरा हुआ है, मतलब दिस इज फिल्ड ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब क्या? ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन। सो दिस ऑर्बिटल इज ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन, बट ये भी ऑक्यूपाइड है विच हैज मोर एनर्जी देन दिस। ये भी ऑक्यूपाइड है, 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 सेम एनर्जी। मतलब ये दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है, बट दे हैव अ हायर एनर्जी देन दिस। ये भी ऑक्यूपाइड है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है, these are called as HOMO. These orbitals are called as HOMO. अभी ये सब ऑक्यूपाइड ही है ना, ये सब ऑक्यूपाइड में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन है? ये है। इधर कौन से है? These are the HOMO. तो अनऑक्यूपाइड किधर है? तो अभी ये देखो अनऑक्यूपाइड, इसके आगे में क्या लिखूंगा? सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या है? सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आया? तो ये जो ऑर्बिटल है, ये क्या है? दिस इज अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, और इसके आगे और एनर्जी बढ़ते जाएगा ना। तो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में ये सबसे कम एनर्जी वाला है। व्हाट आई सेड? अनऑक्यूपाइड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी किसका है? इसका है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लूमो। प्लीज डू दिस, ये अपने नोटबुक में करना ऐसे। समझ में आया? होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो का मतलब है लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर
orbital. Highest occupied molecular orbital. Occupied with what? Electrons. What do you mean by highest occupied molecular orbital? Molecular orbital with with highest energy filled with electrons. Filled with electrons. While यहाँ पे molecular orbitals with least energy with no electrons. No electrons. Understood? Yes. यहाँ पे किसी को डाउट है? होमो और ल्यूमो में किसी को डाउट है? ये मुझे लगता है टेक्स्ट बुक में दिया गया है. अभी देखो, ध्यान से देखना. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है. अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं. तो यहाँ पे मोर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने एनर्जी सप्लाई किया तो, और यहां से इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, तो लेस ट्रांजिशन. सिंस यहाँ पे ज्यादा ट्रांजिशन है, मोर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, which means fluorine has a spectrum which is in a visible range. याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसलिए ऐसे लिखा जाता है. therefore F2 has more electrons in HOMO than that of O2. Chlorine has more electrons in HOMO than that of O2, oxygen. Okay. Hence, F2 has pale yellow color. Pale yellow color, but O2 is colorless. Okay, note down this part.
यस गाइस, समझ में आई ये? हाँ, तो एक बार कभी तो एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई फ्लोरीन इज, मतलब वो ऑप्शंस थे उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में भी रहेगा, हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एमसीक्यूज तो आ जाएगा वो। ओके, तो ये एक हो गया। हाँ, ठीक है। यस, लिख लिया सब लोगों ने? तो यहाँ पे नहीं सर। नहीं लिखा, ओके। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट अपना मतलब इसके पहले ही अपना चैप्टर खत्म हो गया। अभी ये सब एडिशनल चीजें हैं, सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर द जेई मेंस ये इम्पोर्टेंट है। ओके, दीज आर द थिंग्स जो वो हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, इसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह होते हैं। एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स है, मतलब वो जरूरी नहीं है, they are not important at all for your 11th standard board, etc, etc. Okay. So there is one query, sir. On Monday's test, chemical bonding. Do we have entire chemical bonding? I understand वो entire chemical bonding होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग chemical bonding को break करते हैं। ओके, बट जो नेक्स्ट मतलब ये मंडे को जो केमिकल बॉन्डिंग रहेगा वो कहाँ तक रहेगा मैं बताता हूँ, वेट फॉर सम टाइम।
चलो, done. Everybody? Yes, sir. Good. So here we finished the chapter, actually, chemical bonding. At last we finished this. It's a very big chapter, by the way. तो अभी इसको हम लोग थोड़ा टेस्ट के लिए ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में. Bye, sir. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you, bye bye, thank you. हाँ सोहम बोल. सर आम्ही मंडेला ना रात्री बाहेर चाललोय आम्ही एक पार्लर. मिनिट. So bye everybody.